Reproduction in Animals, Part 5. Histology of testes, that is, internal structure of testes. Externally, testis is covered by three coverings. Fibrous covering is called as tunica albuginea, and there are two membranous coverings, that is tunica vaginalis and tunica vasculosa. Internally, testis is divided into number of chambers. These chambers are near about 200 to 300, called as testicular lobules. Each lobule is with 1 to 4 highly coiled seminiferous tubules. In TS or transverse section of testis, we observe number of large spherical units. These spherical units are called seminiferous tubules. All these seminiferous tubules are connected together by connective tissue. Each seminiferous tubule is covered by or lined by a single layer of cells called as germinal epithelium. This germinal epithelium consists of two types of cells. Small and rounded cells are called as germ cells, and large and pyramid-like cells or triangular cells are called as Sertoli or nurse cells. The germ cells undergo meiosis and develop sperms. These sperms are observed in the lumen of seminiferous tubule. The nurse cells provide nourishment to the developing germ cells. Sperms are also called as spermatozoa. Germ cells are diploid and the spermatozoa are haploid, because germ cells undergo meiosis and they produce spermatozoa. So spermatozoa are haploid. Then there are group of small cells in between the seminiferous tubules. These group of small cells are called as Leydig cells or interstitial cells. These Leydig cells secrete the male sex hormone, that is called as androgen or testosterone. This hormone is responsible for development of secondary sexual characters, that is androgen or testosterone, which is the male sex hormone secreted by Leydig cells. In this way, testis performs two functions, that is development of sperms or male gametes, and it also secretes male sex hormone, that is androgen or testosterone. Seminiferous tubules produce sperms and Leydig cells secrete
टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस का टीएस लेने के बाद आप उसकी हिस्टोलॉजी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टीएस ऑफ टेस्टिस, इसमें लार्ज स्पेरिकल यूनिट्स हैं। ये हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अतराफ एक सेलुलार कवरिंग है। ये सेलुलार कवरिंग है जर्मिनल एपिथेलियम। इसमें छोटे और राउंडेड सेल्स जर्म सेल्स कहलाते हैं। ये मियोसिस के जरिए स्पर्म डेवलप करते हैं। लार्ज और ट्रायंगुलर सेल्स ये लेडीज सेल्स कहलाते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाते हैं। ये डेवलपिंग जर्म सेल्स को नरिशमेंट यानी ग़िज़ा प्रोवाइड करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। सेमिनिफेरस टिब्यूल के ल्यूमेन के अंदर स्पर्म भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। इसी तरीके से सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच कुछ स्मॉल सेल्स के ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप कहलाते हैं लेडीज सेल्स, और ये सेल्स मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस के दो फंक्शन हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन।